हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम, जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले आप लोगों को जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से और मार्सिया की तरफ से। मार्सिया आज यहाँ पे है नहीं क्योंकि मार्सिया आज जॉब पे गई हुई है और मेरा आज छुट्टी था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज अकेले वीडियो बनाते हैं। तो आज हम जो टॉपिक को देखने वाले हैं ये है कि पाकिस्तान एक्चुअली बैंकरप्सी की ओर क्यों जा रहा है और पाकिस्तान का ये हाल हुआ क्यों है और इसके पीछे एक्चुअली रीज़न क्या है और इसके पीछे चाइना का जो डेप्थ स्ट्रेटजी है वो कितना ज़्यादा कारगर है इस चीज़ को, यानी पाकिस्तान को बैंकरप्सी की ओर ले जाने में। और चाइना का जो लोन वे है अदर कंट्री को देने का, और उसके बाद वो कंट्री फाइनेंशियली बिल्कुल क्रैकडाउन क्यों हो जाती। फॉर एग्जांपल श्रीलंका एंड बांग्लादेश इज़ ऑन द वे, पाकिस्तान इज़ ऑन द वे। एंड ये जो वीडियो है ना किसी इंडियन ने बनाया है ना किसी पाकिस्तानी ने बनाया है। ये वीडियो एक अमेरिकन यूट्यूबर है, वो अपने आप को खुद एनालिसिस करके इसके पीछे किसका क्या रीज़न है, इसके पीछे चाइना का कितना हाथ है, उस बंदे ने पूरा का पूरा अपना एनालिसिस किया है, उसके बाद इस वीडियो बनाया है। तो लेट्स वॉच। रावलपिंडी, फैजाबाद, कराची, इस्लामाबाद, एवरीवेयर एक्चुअली सब जगह पे। This is Pakistan. Once the fastest growing nation in Asia is now going bankrupt. In 1980 it Pakistanis was are started, I running know. out of food. Currency is running out of value. And politicians, they're running out of options. मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। As I mentioned in my Sri Lanka video, the perfect storm is spreading and it will take down many more countries. Pakistan is just next on the list. Pakistan could face the same reality as Sri Lanka, where people are without food, electricity, and essential supplies like medicine. Currently, Pakistan is facing Asia's second highest inflation, only behind already bankrupt Sri Lanka. But unlike Sri Lanka, Pakistan has faced economic hardship many times in its short history. This I time, think 29 though, times. the situation may be more dire than it's ever been. हमने कभी भी ऐसा 35 सालों में इस्लामाबाद में ऐसा हाल नहीं देखे, इतना हालात खराब हमने नहीं देखे। In Pakistan, the price of fuel jumped by 17%. Islamabad has barely enough forex for 6 weeks of imports. Pakistan is attempting to secure a bailout from the International Monetary Fund. To be eligible for the bailout, Pakistan's government has taken unpopular measures. Will it be the next country to go Sri Lanka's way? Pakistan's long history of problems. Yeah, that's really. I think military is the biggest problem in Pakistan. Okay, so YouTube has been restricting my videos about the protests and other controversial topics like this one. This in turn hurts the reach of my videos. So if you guys have been finding my videos useful and informational, it would mean the world to me if you would just scroll down and give this video a like. It just helps me out a lot with the algorithm while covering controversial topics like the crash of Pakistan. Pakistan, though a popular nation in global news, is actually quite new. It was created by the British government in 1947 after they ended their rule over the Southeast Asian region. Surprisingly, Pakistan quickly became the fastest growing nation in all of Asia after its independence, surpassing the likes of both China and India. But the growth didn't last long. In its 75 years of history, Pakistan has had a total of 29 prime ministers. I was right. Not मैं a बिल्कुल single सही था. one has completed a full term. Political instability has been an unfortunate part of Pakistan's history, which makes it hard for the country to sustain any meaningful progress. For any developing nation in modern history, the most important tool for fast growth is foreign investment. Pakistan can look at the success of foreign investments right at its border with both India and China. China. Unfortunately, it's hard to attract this investment without political stability. Because of the shaky history, every administration always focuses on short-term policies in order to keep the public happy, instead of focusing on long-term improvements that strengthen the country's economy. Subsidies and tax cuts are important Wow, tools a in lot the of government's people arsenal, but they can be disastrous when used to win elections instead of managing the economy.
बहुत बुरी Every चीज है पाकिस्तान administration के came अंदर। into power trying to fix the problems caused by But its मेरे लिए अच्छा है। predecessor, but slowly changed course as they realized that in order to keep power, they needed to keep the public happy. Constant tax cuts and subsidies have decimated the government balance sheet, and the country is addicted to loans like no other. Because of all of this, growth of the economy has been all over the place, and Pakistan has been nicknamed the sick man of Asia. Wow, such a nice name. बहुत This is अच्छा नाम है। China's Belt and Road Initiative, the most ambitious Yeah, infrastructure that's the project headache in for the modern Indian also. history. So the Belt and Road Initiative is this $1 trillion project that China has started to connect itself. Shipping lanes running from China through Southeast Asia, Guy actually didn't put nice map of India. accused China of using debt traps. Over-dependence on China has landed Pakistan in a debt trap. If they all ask for the debt relief, it will cause huge debt burden for China. China. Wow. Okay. This time, the story is no different. But to understand the true scale of this economic mismanagement, let's back up a little bit to 2017, when the past administration was ousted after the prime minister's corruption came to light. New party head Imran Khan ran on a platform of fighting corruption handsome and PM. poverty and was able to According to win fairly Pakistan. comfortably. The new government was granted a growing economy, but that didn't mean problems weren't there. Pakistan's growth was mostly funded by debt. One of those creditors is Pakistan's friendly ally, China. Who wasn't so Like friendly when father. setting the I mean terms Pakistan's of father. that debt. Currently, No, Pakistan Pakistan's has father around is India. $13.5 billion Step in father. outstanding loans from China. But that doesn't include the whole story. There are other types of loans that are not reflected in budget documents, such as $11.4 billion from China's state banks. These loans from China are different from loans that come from the World Bank, IMF, That's or crap. any other country. Usually, loans have interest rates ranging from 1 to 3% and payback periods of 30 years. And But for Chinese China, loans have a surprisingly high rate of 4.5 to 6%, with a payback That's period crap. of only 10 to 15 years. On top of all these outrageous terms, Chinese loans also come with a requirement that projects are handed to Chinese companies who mostly employ Chinese workers. So most of the money ends up finding its way back to the Chinese economy, while countries like Pakistan are left with massive loans and infrastructure that's controlled by China. When China's Belt and Road Initiative was initially launched, Sri Lanka and Pakistan were supposed to be a major beneficiary of those funds. But now both of these countries are facing bankruptcy, and BRI loans played a big part in dragging them down. Remember how I mentioned that all the projects built using China's money are basically controlled by the CCP? Well, that's because Chinese companies are the ones operating these services, even though they are in different countries. As part of its infrastructure initiative, China built 12 power plants in Pakistan that were run by Chinese companies. As Pakistan's struggles grew, it was unable to make payments of its Chinese loans. So what does China do in this time of need? Instead of helping out a struggling ally, China decided to shut down all the 12 power plants unless Pakistan made a payment up front. Now, the citizens were already struggling with regular blackouts during record heat, and stoppage of these power plants definitely is not helping the situation. The IMF is willing to help Pakistan pay off its late payments to China, but the IMF wants Pakistan to renegotiate out of unfavorable terms from its China loans. Otherwise, any IMF help would be a temporary bandage instead of a long-term solution. Of course, all blame can't be placed on China, as these countries' politicians played a crucial role in mismanaging their delicate economy. As a developing nation, Pakistan depends mostly on imports to keep its citizens happy. Energy was mostly imported, medicine was mostly imported, and even a big portion of the country's food was imported. Because of heavy imports, Pakistan is no stranger to overspending past its budget. The country has turned to the IMF over 30 times to ask for help whenever it gets in trouble. Similarly to Sri Lanka, problems were always there, but they became more evident as global economic tides turned. What may come as a surprise to many,
COVID actually helped Pakistan's economy to an extent. That's not something you Yes. hear often. During COVID, the local demand for necessities like gas dropped significantly. Because of this, the government was able to take a breather from borrowing money to provide for its people. Oh, you don't have food, so don't Fortunately, eat. this relief That's why they was actually get relief. temporary. As the economy opened back up after the lockdown, the debt pressure on the country's finances increased. इस वीडियो के देखने के बाद मेरे को एक चीज़ याद आया। सर आलोक अपने इंडियन है, उनका एक यूट्यूब चैनल है, वो रिएक्शन देते हैं। मैं उनका वीडियो देखता हूँ, वो एक्चुअली रिएक्शन देते हैं पाकिस्तानी कंटेंट का। लाइक कोई बंदा होता है, रास्ते में इंटरव्यू करता है, उन बंदों से पूछा जाता है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडिया। तो बंदा कहता है इंडिया हमसे बहुत गरीब है, इंडिया की फ़ौज हमसे बहुत डरपोक है, हम लोग नंबर 1 सेना है। सो पाकिस्तान में सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे नॉलेज की कमी है, वहाँ पे अवेयरनेस की कमी है। उनके अकॉर्डिंग वी गाइस एज अ मुस्लिम, सो अदर जो बंदे होते हैं वो उनके कंपेयर में, उनके अकॉर्डिंग, उनकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग छोटे होते हैं। और वही जब बात होती है उनकी पॉलिटिक्स की, जो पॉलिटिकल होते हैं वो अपनी कंट्री को कहीं कॉर्नर में रख देते हैं, क्योंकि उनको चाहिए अपनी पार्टी को सेंटर में, यानी कि उनको अपने प्रधानमंत्री बनने के लिए, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, वो अपने देश के बारे में सोचते नहीं हैं। और जो हमारे कंट्री की बात है, यहाँ का कल्चर है देश पहले, उसके बाद पार्टियाँ आती हैं। कुछ पार्टियाँ बुरी होती हैं जो सेल्फ के लिए काम करती हैं, कुछ पार्टियाँ होती हैं जो अपने देश के लिए काम करती हैं, लेकिन दोनों पार्टियों का मकसद एक ही होता है कि देश को आगे लेके जाना। बट पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। और पाकिस्तान जो एक कंट्री है ना, उसको दूर तक का नहीं देखता है, क्योंकि उनकी जो थिंकिंग है वहाँ तक पहुँचती नहीं है। उनके मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो जो होते हैं वो ना कहते हैं ना कि मेरे को शाम को खाना चाहिए, तो भैया मेरे को 10 रुपये दे दो, जब मैं रात को खाना खा लूँ, फिर कल के लिए क्या होगा, भैया मेरे को कल के लिए भी दे दो। बताओ 29 टाइम वो ये लोग IMF के बाद गए थे, इंडिया भी गया था 1991 में, उसके बाद इंडिया कभी नहीं गया। तो जो चीज़ें पाकिस्तान को इंडिया से सीखना चाहिए, वो पाकिस्तान एक्चुअली एरोगेंट बन करके बोलता है कि पाकिस्तान इज़ नथिंग फ्रंट ऑफ इट। एंड एक्चुअली हम जो इंडियन है ना, उनकी बातें सुन करके हमें बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज वो चीज़ें जो होती हैं इंटरटेन के लिए, ऐसा इंटरटेन काम करती है हमारे लिए। हाँ, ये चीज़ें बुरी लगती है कि अगर कोई बंदा अमेरिकन बंदे से पूछे व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडिया, एंड वो बंदा बोले कि इंडिया इज़ नॉट सो पावरफुल और नॉट सो रिच इन कंपेयर टू अस, सो उस टाइम पे हमें बुरा लगेगा। बट कंट्री लाइक बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, सम अरबिक कंट्री, वो लोग अगर बोले कि ना वी आर ग्रेटर देन इंडिया एंड वी आर आवर आर्मीज आर मच बेटर देन इंडियन, सो या हमें दुख नहीं, हमें हंसी आती है। और हमारे लिए वो कहते हैं ना दवा का काम करता है। और हम लोग आजकल बॉलीवुड देखना बंद कर दिए, तो इंडिया में लोग आजकल पाकिस्तानी बंदों को देखकर थोड़ा ज़्यादा इंटरटेन हो रहे हैं। सो मेरे अकॉर्डिंग पाकिस्तान को ये जो चाइना का ट्रैप वो समझ में नहीं आता है। किसी कंट्री में कोई बंदा इन्वेस्ट करता है तो किस बेस पे, कि बंदा जा कर के पैसे डालता है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उस कंट्री के होते हैं। जैसे इन कंपेयर इंडिया में, अगर इंडिया में सैमसंग आई, तो जो सैमसंग है उसमें से 10 to 20% जो होते हैं वो उस कंट्री के होते हैं। 80% जो बंदे होते हैं जो जॉब करते हैं वो इंडियन होते हैं। और ऐसा नहीं कि जैसे कि पावर प्लांट और वो कोई रोड बेल्ट वगैरह है ना, मेरे को पूरा नाम नहीं है याद है, उनमें क्या है कि चाइनीज़ पैसे डालते हैं, चाइनीज़ अपने बंदे को लेकर आते हैं, चाइनीज़ अपनी टेक्नोलॉजी लेकर आता है। तो क्या इसका मतलब है, जो चाइना है पैसे डालता है एज अ लोन टू द पाकिस्तान, एंड उस पैसे को वापस ले जाता है, उसके बावजूद कहता है कि भैया मेरा लोन आप दे दो विद इंटरेस्ट। सो पाकिस्तान को, मैं पाकिस्तानी बंदों को भी बोलना चाह रहा हूँ, अगर देख रहे हो, वैसे कोई मेरा वीडियो पाकिस्तानी बंदा देखता नहीं है, कि बंदे को ना अपने दिमाग को ओपन करना पड़ेगा। वो जो 20 साल 30 साल पहले का जो दिमाग था ना, उससे उसको डिलीट करके नया, कहते हैं ना, अपडेट करना पड़ेगा, नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारी कंट्री कहीं ट्रैक पे आएगी। और अपने नेताओं की बातों को सुनना छोड़ दो, यूज़ योर कॉमन सेंस। सो ये मेरा रिएक्शन था और ये मेरी सोच थी। अगर आपको लगता है मैंने इसमें कुछ गलत या कुछ अच्छा बोला तो आप कमेंट बॉक्स में इसे लिख सकते हैं। और इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हैं हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करना, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप लोगों को हमारे लिए टाइम देने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद।